Soccer Games on the 16th of June 2019. True FM celebrating Youth Month like no one else. Woman Wise on the midday frequency like no one else. There we go. Very interesting. This Well, two left-handers, of course. this could go one of two ways, I think. So the right arm off-break bowler is going coming in ahead of Jos Buttler. I mean, if these two batters get England up to 250, the scene will be set for Buttler to come in and just go pretty wild. Yep. So he's going to be bowling right arm around the wicket. There is a slip in place. Hash is down. And he just gives it a bit of a loop and fields off his own bowling. Fine. And 5 more. Yeah. So, we've managed to get through one. England 131 for 3 in the 25th over. Accuracy absolutely critical for JP Duminy here. Yeah. He can spray them a bit. And that was which is what he does. not great. It's looped away and full outside the leg stump, and Ben Stokes is able to just work it down to third man. They go through for 2, 133 for 3. In the 133 for 3 overs. Very good. That was very good. Yeah, very good. Spent some time in Ireland. Did you really? Drank He comes in again, just loops it, and defenders cautiously down England here. I mean, the run rate has gone down from 6 down to just under 5.4. That'll have gone up a bit now with that 6, but very interesting. Slower ball now, hopefully. Coming a little bit wider on the crease, but onto the leg side, and that is just lofted away over a fine leg for yet another 6. Smack it in the air. Smack it in the
ball remaining in the 26th over, is it? Yeah. So certainly up until this time in this partnership, which is now 37. After having it was there were 5 in that over actually. They were. One of which travelled for 6. The second 6 was a dreadful ball, but all of the others were actually really, really good balls. So just having a look at the scorecard for today so far, 50s from Roy and Root. Johnny Best to our first ball duck, which Imran Tahir nearly ran all the way back to the hotel. He was so excited. and now Owen Morgan on 27 of 22, and Ben Stokes 13 of 21, and Owen Morgan in particular beginning to look ominous. Right, JP Duminy is going to be bowling to Owen Morgan. That slip in place. Good morning, good afternoon, good dawn and good dusk, wherever you are in the world. Welcome to Gorilla Cricket and welcome to our World Cup podcast, long awaited, I'm sure, by all of you out there. I'm Gorilla Hendo, Nigel Henderson, and I am joined by people from round the world. 2 alongside me in the studio here. I have Nakul Pandey. Hello, Went for just 4 runs in his first over. Left, right arm around the wicket to the left-hander and Jim just played into the onside. There is not really shy at the stumps, actually. Just collected and sent gently back to JP Duminy so that there's no chance of overthrows like we saw with that nervous first ball of the game. Second ball wasn't bad. No, it wasn't, was it? No, it wasn't at all. More of those, weren't they? I'm okay, and yourself? I'm sure everyone's doing well. Well, I've been ill. Everyone knows I've been ill. I like to lay it on a little bit, hopefully get a bit of sympathy. But the first thing I want to talk about with you guys is kits, World Cup kits. Do we need new kits every time we have a World Cup? I'm particularly concerned, if I can come to you first, Mpo, with the number of teams wearing green. And on the basis that there are South Asian teams wearing green, don't you think that the South Africans could be a little bit more original? Maybe a bit of yellow and black and maybe, I don't know, a little bit of red in there? No. We are also green and gold, and we do have a change strip. It was a yellow one, and we used it at the Champions Trophy the last time we had a tournament in England. So it'll be interesting to see if that change strip will be used again. It's normally our T20 kit, but we'll just have to see, especially when you play Pakistan and Bangladesh, as to who the home side is. Who's that? Stokes, just playing it into the onside and collected by someone in a wide-brimmed hat who may or may not be Hash. Was he taken out of slips there? Hash, yes. So he's one ball remaining in the 26th over, is it? Yeah. So certainly up until this time in this partnership, which is now 37. After having it was there were 5 good balls in that over actually. They were. One of which travelled for 6. The second 6 was a dreadful ball, but all of the others were actually really, really good balls. So just having a look at the scorecard for today so far, 50s from Roy and Root. Johnny Best to our first ball duck, which Imran Tahir nearly ran all the way back to the hotel. He was so excited. and now Owen Morgan on 27 of 22, and Ben Stokes 13 of 21, and Owen Morgan in particular beginning to look ominous. Right, JP Duminy is going to be bowling to Owen Morgan. That slip in place. He went for just 4 runs in his first over. Right arm around the wicket to the left-hander and just played into the onside. There is not really a shy at the stumps, actually. Just collected and sent gently back to JP Duminy. So no chance of... one of which travelled for 6. The second 6 was a dreadful ball, but all of the others... 20 and 340. If they don't lose any more wickets for the next 12 overs, then 340 is definitely on the cards. Oh, yeah. Aidan Markram has only... Before the over. So it's only bowled in 3 innings. Right, Imran Tahir back into the attack, tucked around the corner, and they take no run.
So, not surprisingly, he replaces JP Duminy, who went for 10 off that last over. Bit of a concern here if the South African spinners are able to put a cap on the scoring rate here, and English spinners, apart from Imran Tahir, are much, much better than the South African spin attack. Right, played into the offside, and they go through for a single, 161 for 3. Morgan's on 37 of 33. Stokes still quite watchful, 16 of 24. They're actually batting very similarly. It's just pretty much that 12 that is the difference between them. So I got a tweet from Chris TB saying, I reckon the ICC have made England and SA go with these kits so they can tell people in the subcontinent it's India versus Pakistan. So great Yes, so leggy there from Imran Tahir into the left-handed Stokes. He punches that into the offside for no run. It's an interesting one. The way you deal with wrist spin in this tournament is going to determine how far you go. Yeah. Beautiful shot there by Ben Stokes off the back foot, punching it to the cover boundary for 4. There's not one boy for me, I must have 2 or 3, I need 4. Yeah, very good shot. Short ball there by Imran Tahir, and Ben Stokes, being the batsman that he is, हमारे कौन से लिसनर्स हमारे साथ दे रहे हैं जी बिल्कुल FM 101 चैनल और इसके बाद आप लोगों की कॉल्स को भी हम बैक टू बैक जी बिल्कुल आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा बैक टू बैक मगर इस वक्त FM 101 चैनल पाकिस्तान के ऊपर आप लोगों के मैसेज मगर उससे भी पहले टाइम चेक ब्रेक की जानिब हमें पढ़ना है बिल्कुल जनाब और टाइम चेक के बाद हम वापस आएंगे तो ये सिलसिला इसी तरह आगे जारी और सारी रहेगा और लेट्स सी क्योंकि वक्त बताना भी बहुत जरूरी है 101 time check it's 4:30 wouldn't miss out on that one. This one down the leg side, flicked to square leg there, forward of square leg, and they come through for a single. A little bit of an expensive over here by Imran, but we know how much of a wicket taker this man can be. And so being able to handle wrist spin in this World Cup will be South Africa's biggest question. This one was fuller outside the off stump, and Morgan drives that square to point, and they come through for a single, 167 for 3. So at the end of the over, 29 gone. England are progressing well, but South Africa having taken those 2 quick wickets, Jason Roy and Joe Root to peg England back slightly. But tweet in from Pirate Badshah, who says that 23 of Morgan's 223 ODIs were played for Ireland, who also wear green, by the way. So it is actually the 200th one, yes. This is the 200th for England. His last of which, in fact, for Ireland was against in Benoni against Canada on the 6th of April 2009. We were given the incorrect, I think the date initially was given was incorrect, changed that, so very interesting. And Chris TB says no one can accuse Faf of boring captaincy, which I think is correct. इंटरेस्टिंग है कि एक साइड से कैप्टन इयन मॉर्गन की कोशिश है कि जरा गेयर्स को शिफ्ट किया अच्छे तरीके से एक्सेलरेट किया जाए ताकि एक अच्छा टोटल यहाँ पे सेट करने में वो कामयाब हो। दूसरी जानिब देखना ये है कि बेन स्टोक्स किस वक्त जो है वो एग्रेशन दिखाते हैं और कुछ अच्छे शॉट्स उनकी जानिब से हमें देखने को मिलते हैं। ओवरऑल दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो अभी तक अच्छा सिलसिला बॉलिंग में जारी और सारी है। जो 2 विकेटें गिरी इनफैक्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं थी, बल्कि बल्लेबाजों ने खुद मिस्टेक की, उन्होंने खुद जो थे वो कैचेस जो है वो फील्डर्स को थमाए उनके हाथों में। अगर बात की जाए जो रूट्स की या ब्रेड स्टॉक की, अगर जो रूट्स को देखा जाए तो वो रबाडा को कट करने के लिए गए थे, पॉइंट की पोजीशन के ऊपर ड्यूमिनी ने उनका कैच अपने हाथों में थामा और उनको चलता बनाया वापस पवेलियन की जानिब। अगर ब्रेड स्ट्रोक की तो इमरान ताहिर का शिकार बने, उससे पहले अच्छे सेटल बैट्समैन थे रॉय, जेसन रॉय, और वो शिकार बने फ्लुकवायो का, और फाफ डुप्लेसिस ने उनका कैच अपने हाथों में थामा और उनको भी चलता बनाया। तो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त सामने आपको बताया चले यह है कि 169 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 29.3 ओवर्स का खेल अब तक हो चुका है। इस वक्त कैप्टन इयन मॉर्गन जो है वो 39 रन के ऊपर मौजूद है, 37 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस ये कह लें कि इनिंग्स में उनके 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। 105 रन का उनका स्ट्राइक रेट है। दूसरी जानिब बेन स्टोक्स की अगर बात की जाए 22 रन बनाए, 28 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका शामिल है और 78.57 जो है वो उनका स्ट्राइक रेट। एक्स्ट्रास के 3 रन शामिल हैं।
जी हमजा। जी हमजा चाहेंगे। काफी देर से आप टिकटिकी जमा कर जो है वो पहले टीवी स्क्रीन को देख रहे थे और फिर सेलफोन के ऊपर कुछ एनालिसिस की आप जिसे कह लें कि वो जांच पड़ताल कर रहे थे, कुछ सामीन के साथ तो हमारे साथ भी शेयर कीजिए। का बता रहे थे कि वो कट करने के उसमें आउट हुए थे, लेकिन कट अरसलान भाई यहाँ पे वो कट नहीं कर रहे थे बॉल को, वो बॉल को ड्राइव कर रहे थे, ओपन ब्लेड से ड्राइव करने के लिए गए थे, जो कि बॉल लेंथ उसमें पड़ा और वहाँ पे सीम हुआ बॉल और बिल्कुल जेबी डिविलियर्स ने बड़े आसानी जो है उनका कैच लिया। साथ ही वो एक ऑन दी अप पुल करना चाह रहे थे, जो कि अच्छा टाइम नहीं हुआ और डुपल्सन ने उनका आसानी कैच किया। अब 170 के मजमूई स्कोर पर 3 खिलाड़ी खत्म हो चुका है। अच्छे स्कोर में और अच्छी विकेट के साथ इंग्लैंड अभी तक पोजीशन में मौजूद है। साउथ अफ्रीका को अब यहाँ पे कोई भी इनमें से विकेट हासिल करनी होगी अगर थोड़ा बहुत रन इन्होंने कंसीड करना है, खासतौर पर मॉर्गन की, क्योंकि मॉर्गन आखिरी के ओवर्स काफ़ी तेज़ खेलते हैं और टीम का जो स्कोर बोर्ड है वो चला के रखते हैं। नीचे इनके पास जॉस बटलर है, अब इनके पास अच्छे नीचे हार्ड हिटर मौजूद हैं, तो यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू लाजमी होगा साउथ अफ्रीका के लिए, जिसके लिए फिलिप मायो को जो है वो वापस बॉलिंग अटैक के लिए लाया गया है। बिल्कुल, और फ्लिंक बायो जो है वो दोबारा से आ चुके हैं और लेट्स सी कि अब 3 ओवर्स कराए हैं। मेजन इनका कोई भी ओवर नहीं रहा, 16 रन्स दिए हैं, एक खिलाड़ी को आउट किया है। लेट्स सी कि अब इस वक्त कोशिश यही है साउथ अफ्रीका की कि यहाँ पर एक जो है वो और बड़ी विकेट हासिल की जाए ताकि मैच को जो है वो कम से कम स्कोर्स पे जो है वो उसको ख़त्म करने में, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त अगर कोई विकेट गिरती है तो डेफिनेटली उसका फाइनल स्कोर के ऊपर जो है वो असर पड़ेगा। आप लोग लिस्टर्स क्या कहते हैं, कौन सी टीम आज के मैच में आप फेवर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि स्कोर आज का जो मैक्सिमम फर्स्ट इनिंग में है, यानी इंग्लैंड आज फर्स्ट बैटिंग कर रहा है, आज का इफ्तिताही मैच है, पहला मैच पहली बैटिंग मेजबान टीम कर रही है, तो कितना टोटल स्कोर करेगी। और हमारे साथ कॉलर भी हैं। जी अरसलान, आप में हरमिन से बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहे हैं इमरान साहब सियालकोट से, और मैच से महसूस हो रहे हैं आप? मैच के वाले यही कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जैसे कि पहली विकेट आउट हुई थी, जिससे इसकी वजह से उन्होंने विकेट बचाने की वजह से वो स्कोर भी रुक रहे थे। अगर ये किसी तरह विकेट बचाते रहे और स्कोर बहुत थोड़े होंगे। अच्छा, कितना स्कोर होगा, एक्सपेक्टेड क्या है, आप क्या समझते हैं, कितना स्कोर बना लेगी यहाँ पर इंग्लैंड की टीम? अगर स्कोर पर फोकस करेंगे तो मेरे अंदाजे से 300 से भी ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, और आज विकेट बचाएंगे, विकेट बचाएंगे तो फिर 300 तक ही जा सकते। अच्छा, ये बताएं आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड? तो मैं वैसे साउथ अफ्रीका को पा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदाजे से मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जीत जाएगी। मुझे भी वैसे ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, चले मैडम, आपने भी अपने ख्यालात का इजहार बिलाखिर कर ही दिया। और सुनने वालों को सियालकोट में जितने मेरे दोस्त होंगे उन सबको सलाम कहता हूँ। चले, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है, और आपको ये पसंद आ रही है हमारी ये काविश? हाँ जी, बहुत अच्छी बातें लग रही हैं, लेकिन आप अकेली इनमें फंस गई हैं। नहीं, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा इस वक्त एनवायरनमेंट, अगर मैं आपको बताऊं स्टूडियोज का, वो भी बड़ा जबरदस्त है और मुझे पूरा मौका दिया जा रहा है कि मैं अपनी बात जो है मुकम्मल कर सकूं। मौका तो वैसे मिल रहा है, लेकिन कभी कभी आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। वो तो बस फिर जाहिर है आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए फिर इस तरह के भी साथ साथ में बातचीत जो है वो होती रहती है। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वेल जनाब, ये हमारे कॉलर्स और लिसनर्स जो है ये भी हमारे फैमिली मेंबर है, जाहिर है इसी तरह बात होती है। जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन मेरे भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, अपना तारुफ करवाइएगा। आपकी आवाज नहीं शायद पहुंची। मैं भावलपुर से बोल रहा हूँ। भावलपुर से कौन साहब हैं? हनीफ साहब हमारा साथ दे रहे हैं। हनीफ साहब, आज तो भावलपुर की जो ट्रांसमिशन FM 101 की है वो भी इस्लामाबाद के नेटवर्क पे है, तो कैसा लग रहा है आपको ये क्रिकेट अपडेट्स का सिलसिला? अच्छा लगा, सही। और क्या कहना चाहेंगे आप आज के मैच के बारे में? आप थोड़ी सी, आपसे माजरत के आप थोड़ा ऐसी जगह पे चले जाएं जहां सिग्नल ड्रॉप ना हो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बात सही है, अब बेहतर आ रही है जी, अब बात मुकम्मल कीजिए अपनी।
माजरत के साथ हनीफ साहब, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच रही। आप दोबारा से कॉल कीजिए और ऐसी जगह से कॉल कीजिए जहां पे सिग्नल्स आप पहले देख लें, आपके सेल फोन पे मुकम्मल आ रहे हो, तो तब आप कॉल में लाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, गुलाम हुसैन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से गुलाम हुसैन, पाकिस्तान आर्मी से। हुसैन, पाकिस्तान आर्मी से, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। जी जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा नशरियात आ रही है हमारे पास। शुक्रिया जी, और सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक दे देना। चलें, एडवांस में ईद मुबारक। और आपके वैसे लहजे से मुझे लग रहा है कि आपका ताल्लुक सिंध से है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सिंध से। देखिए मैंने पहचान लिया। और गुलाम हुसैन, कहाँ सिंध में कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है? सिंध जिला नौशहरा फिरोज। नौशहरा फिरोज से, अच्छा। और मुझे ये बताएं आप गुलाम हुसैन कि अब ये क्रिकेट अपडेट्स तो यकीनन आप रेडियो सेट के थ्रू सुन रहे हैं, तो आज का जो मैच है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, आप क्या समझते हैं कौन सी टीम जीतेगी? किसको फेवर कर रहे हैं आप? हम तो फेवरेट साउथ अफ्रीका ही कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने तो बहुत ही बुरा किया हमारे पाकिस्तान के साथ। अच्छा, आप भी इसी से तनाजुर में देखते हैं? जी, ये सारी मैचें मैं टीवी पे देखता हूँ, जब ड्यूटी खत्म होती है तो टीवी पे, नहीं तो फिर रेडियो पे सुनता रहता हूँ। अच्छा, आपको क्रिकेट पसंद है? हाँ सही जी सही। बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छा देखता रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि पहले तो हमारी पाकिस्तान की गलती की वजह से मैच हारा है, हमाद वसीम की वजह से ना। हाँ बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं गुलाम हुसैन कि आज इंग्लैंड कितना स्कोर करेगा? इंग्लैंड तो मेरे ख्याल, मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह के 200 पे ऑल आउट हो जाए। लेकिन मैं तो यही दुआ है। फैक्ट से अब 175 तो हो चुके हैं अब से थोड़ी देर पहले 3 खिलाड़ियों के आउट पे, तो अभी लेकिन तो ये ओवर्स पता भी नहीं, पड़े हुए हैं, बॉलिंग बताएं। का तो मैडम कोई पता नहीं चलता ना। हाँ, लेकिन आप वैसे आप समझते हैं 200 होगा? नहीं, मेरा अभी कहने का ये मतलब कि 250 ही होगा। 250, चल 250 तो इंशाल्लाह ज्यादा ना ही यहाँ तो अच्छा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छा ही और अच्छे मैच जीतने में फायदा हो जाए। आप साउथ अफ्रीका को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल चले बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया। तो ये नशा माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है हमारे पास आपका। सही, चले, हमें बड़ा अच्छा लगा। सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम दे देना। चले, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन, हमें बड़ा अच्छा लगा आपने कॉल किया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, थैंक यू। वेल जनाब, ये गुलाम हुसैन थे। वैसे तो पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक है और नौशहरा फिरोज से वैसे सिंध से बिलोंग करते हैं और हमारा साथ दे रहे थे। वेल इस एक छोटा सा एक ट्रैक जो है वो इस वक्त आपको सुनवाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून टू FM 101। सेंसोडाइन लाया नया डीप क्लीन, एक मुनफरिद फोमिंग जेल जो दे सेंसिटिविटी के दर्द से आराम के साथ बेहतर सफाई और देर पा फ्रेशनेस का एहसास। Always ahead. FM 101, 101, 101, 101, 101. सेंसोडाइन लाया